Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं बाजार विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वेलकम राजीव। थैंक्स राजेश, धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Rising for the third straight day, Sensex climbs 258 points, Nifty adds 115 points. But the rupee weakens 10 paise against the dollar. Credit rating agency Moody's raises country's growth projection for the next financial year to 13.7%. MSME sector in India has emerged as a growth engine of the economy, says RBI Governor Shaktikant Das. लगातार तीसरे सत्र शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 258 अंक बढ़ा, निफ्टी 115 अंकों की वृद्धि में रहा, लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की गिरावट में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अगले वित्त वर्ष के लिए देश में वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर किया 13.7%। और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र भारत में अर्थव्यवस्था में वृद्धि को प्रमुख बढ़ावा देने वाला क्षेत्र बन गया है, कहा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.5% की वृद्धि से 258 अंक बढ़कर 51,039 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.8% की तेजी से 115 अंक बढ़कर 15,097 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां तेजी और भी अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.1% बढ़ा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.4% की वृद्धि दर्ज हुई। At the stock markets, rising for the third straight day, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 258 points or 0.5% to close at 51,039 today. The Nifty at the National Stock Exchange added 115 points or 0.8% to 15,097. In the broader market, the BSE mid-cap index advanced 1.1% and the small-cap index rose 1.4%. Market breadth on the BSE was strong with 3 gainers for every 2 losers. Among the sectoral indices on the BSE, the oil and gas index shot up 3.5%, the metal index spurted 3.4%, the power index advanced 1.8%, the realty index climbed 1.6%, the consumer durables index added 1%. The telecom and the healthcare indices rose about 0.8% each. The auto index gained 0.7% and the tech index moved up 0.6%. And the IT index gained 0.5%. The FMCG index was the only declining index, falling 0.2%. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले आज 10 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत 72 रुपए 41 पैसे दर्ज हुई। Rajiv, the domestic markets today added strength to yesterday's rally supported by positive FNO monthly rollover and the robust global markets which we will bring in a short while. What do you have to say about it? Well, Rajesh, if you look at just before these 2 days of rally, we had almost couple of 4 or 5 days of correction in which both the broader markets and broader market index and some of the mid-cap segment of the market witnessed a correction. So after the correction and a shakeout, probably we have seen part, as you said, FNO related up move because of short covering, and yes, there is a domestic money coming into the
market, and the hope is that the numbers, the earnings which have shown a significant improvement in Q3, probably some more sectors would be joining the bandwagon of the sectors where the results are coming better than expected. Because most of the companies during the lockdown period have been able to increase their operational efficiency. Unless the sector was, like tourism and all, which were badly hit or literally closed, most of the other sectors, there was some activity going on, there the operational improvement has been there. And a part of that improvement is going to stay with these companies for quite some time. Those increase in margins which they have been able to report, a part of it is going to stay even after everything comes back to normal. राजीव, जैसा आप कह रहे हैं कि जो कंपनी रिजल्ट्स हैं वो उत्साहजनक हैं क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कॉस्ट कटिंग मेजर्स के बेसिस पे, डिमांड रिवाइवल के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ी है. एक और चीज हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस इंडेक्स और मेटल इंडेक्स आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाले वो रहे सेक्टर्स रहे. क्या लगता है आपको, जो कमोडिटी प्राइसेस में उछाल आ रहा है, मेटल कॉपर प्राइसेस 9 ईयर हाई पे है, ऑयल प्राइसेस मोर देन 1 ईयर हाई, क्या उसकी वजह से आपको लगता है कि ये जो बेसिक सेक्टर्स हैं ये भी आगे चलकर इनके भी प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट रहेंगे? नहीं, इसमें मुझे लगता है ये दो रेड फ्लैग्स आपने रादर बुलिश नहीं है. दीज आर दी पॉसिबल रेड फ्लैग्स जो कि हमारी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पार्ट ऑफ इंक्रीज जो आप मेटल प्राइसेस में देख रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी इंक्रीज इन डिमांड, बट इट इज बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इन द लॉजिस्टिक्स. शिपिंग रेट्स जो है वो बहुत बढ़ गए हैं. यूरोपियन कंट्रीज से जो कंटेनर आते थे वो वहां पे लॉकडाउन जो सेकंड फेज चला है, इंक्रीज चला है, तो देयर इज अ होल डिस्ट्रप्शन इन दी ग्लोबल लॉजिस्टिक्स. उसकी वजह से कई जगह पे सम प्राइस इंक्रीजेस हैपेंड इन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर. सो उसकी वजह से इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजों का इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा, प्राइसेस डोमेस्टिक बढ़ गए हैं. वो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिमांड की वजह से बने, वो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स है. सो आई डोंट थिंक सो कि वो सस्टेनेबल है. चाइनीज डिमांड ऑफ कोर्स इज वन फैक्टर जो है, और वहां से जो थोड़ा जो एक्सपोर्ट है वो भी थोड़ा हिट हुआ है. सो एज फार एज मेटल इज कंसर्न, दैट इज वन सेक्टर जो हो सकता है अगले 10 दिन 15 दिन मे बी 1 महीना चल जाए, बट इट्स नॉट समथिंग वेयर आप कहे कि आप साल 2 साल इट्स समथिंग विच यू कैन लुक फॉर इन्वेस्टमेंट. सस्टेनेबल ग्रोथ आप कहाँ देखते हैं, कौन सी सेक्टर? आई थिंक सस्टेनेबल ग्रोथ जहाँ पे मुझे लगता है वो आज सेक्टर जो पुराने हैं, आईटी है, उनमें जो एडिशन हुआ है, जहाँ पे आने वाले टाइम पे देयर इज अ मेजर शिफ्ट एंड अ मेजर बूस्टर फॉर इंडियन आईटी. दैट इज आईटी इज अ फार मोर सेकुलर ग्रोथ स्टोरी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. द अदर प्लेसेज आर वेयर जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर शायद आप नहीं ले सकते, वो है ईवी स्पेस वगैरह, जहाँ पे कुछ मूलभूत चेंज हुए जिनकी वजह से जो डिमांड है वो विल बी ऑन अ हाई ट्रेजेक्टरी. सो ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो मुझे लगता है, जो आपने सस्टेनेबल रेटिंग की बात करी है, सस्टेनेबल डिमांड की बात करी. So Rajiv, do you think this is a buy on decline market and the bull run is pretty much intact? Well, I mean, bull run is intact till the time actually one realizes the market has corrected by 10% or 15%. Coming to your question, yes, it's buy on decline, but Rajesh, in markets it depends what you are buying. In last 20 years, if you were buying stocks like Asian Paints, and every decline in any panic, you're buying HDFC Bank, Infosys, all those things have paid well. So it depends what you are buying. But if you're going to buy companies, which I see, again today there was a situation where I saw a company in IBC trading at upper circuit filter, all those things, if you're going to buy, what we call crap in market or kachra in market, then it's not you're not going to be happy a couple of months down the line. But if you're going to buy businesses, good businesses, well-run companies, better balance sheets, that is where it's buy on dip, or even when it's rising, there's no harm in buying them. So some sectors that you would like to the investors to look at closely? Well, as I just mentioned about, one is IT. Yeah. IT, and in that some of the mid-cap companies, some of the companies which in last 5-6 years have been able to make their space in the digital space. Unlike large companies, smaller IT companies were far more nimble-footed in moving into new technology. So some of them are now, their investment in terms of manpower and trying to get those smaller contracts is now paying off. Some of the companies which are getting into this, are the backbone of somewhere in the blockchain.
That is one area where small IT companies one can look at. Then again, financial services had scope 50 years back, and probably next 50 years, that is another space where you have to be there. I mean, when I say financial services, it's private sector bank, it's PSU banks, some cyclical where infrastructure is there. But you will have to pick the stock which is there in the infrastructure, whether you want to go with an infrastructure financer or the company which provide resources in terms of, leasing the machines and all those things are there. So these are the areas which one has to look broader space, then one has to get into one specific companies where things are, looking good. राजीव, यूएस फेड ने जो इंडिकेशन दिया है, स्ट्रांग इंडिकेशन की इंटरेस्ट रेट्स वहां पर हो सकता है 3 वर्षों तक कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो अभी निचले स्तर है उस पर ही बने रहेंगे. इन व्यू ऑफ दैट आपको एफपीआईज का आगे चलकर क्या अप्रोच लगता है? आपको लगता है अभी तक जो ब्रॉडली उनका एक आकर्षण था भारतीय बाजार की तरफ, वो जारी रहेगा इस वर्ष में भी? देखिए सोनू जी, जहां तक 3 वर्ष के कहने की बात है, वो स्टेटमेंट जो है वो चेंज होते मालूम नहीं चलता, बिकॉज इट्स अ वेरी डायनेमिक सिचुएशन. यूएस में डेटा पॉइंट्स बहुत अच्छे से कलेक्ट होते हैं, बट एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि यूएस सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर रहे हैं, दे हैव बैक ट्रैक फ्रॉम व्हाट दे हैव सेड विद इन फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन. सो आई वुड से दैट इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन इवन देयर. वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट नंबर अच्छे नहीं है, सो दैट इज वाई प्रॉब्ली दे आर गिविंग दिस फीलिंग के इन्वेस्टमेंट रहेगा. सो आई वोंट से कि 3 साल का क्या होगा, बट इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो कि जैसा आप कह रही हैं कि बिकॉज लिक्विडिटी विल रिमेन हाई और कॉर्पोरेट अर्निंग आर इम्प्रूविंग, देयर इज अ डायरेक्शनल शिफ्ट इन द वे इंडिया इज मूविंग. द पीएसयू की डिसइन्वेस्टमेंट होगी, बैंक्स की प्राइवेटाइज होंगे, और उसके चलते प्रोबेबिलिटी है कि वी विल गेट बिगर शेयर ऑफ फॉरेन इनफ्लोज नॉट ओनली दिस ईयर but also next year, depending के emerging market में flows आते हैं तो. So, Rajiv, going forward, what do you think one should do when it comes to small and mid-cap stocks? They continue to outperform over the benchmark indices. Today, for example, 1.1% and 1.4% in mid and small cap indices. Rajesh, these sectors, and these index and these stocks looks very lucrative when, when we're on a bull run. I mean, you see 20% rise for 2 days, 40% gain in 2 days, and you can't get 4% in 1 year on your FD, or 5%, that is what you get on your FD, and then you see a 50% return in a month's time. So they look attractive, but they look attractive only for a period of time. While there is a huge reward, but there is even a bigger risk. The probability that, because it's a small company, it might get crushed because of some economic reason, some mistakes committed by a promoter, or some change in the, technology. I mean, look at the number of companies which have become literally redundant because of technology. There's a huge long list, and especially if it's a mid-sized company, the chances are there. Then they have debt on their books. So while it looks attractive on face of it, but one has to do far more hard work and research before investing into this. So while even at this point of time, yes, of course, there are multiple opportunities, but one will have to look case by case and figure out how the business of that particular mid-sized company is going to grow, and whether the management has the ability to take growth forward going ahead or not. So while I would say that, I mean, there is no harm in investing in mid-caps, the better way for people, retail investors who don't have time or the skill set to look into companies, I would suggest they should go for an ETF where the focus area is investing in mid-cap index or mutual funds, where at least a professional fund manager is doing the hard work, hard part of the work for you, and of course charging you a fee. In that case, you can go, rather than going through advisor, take a direct, plan and increase your exposure to that scheme so that your returns are better. So there are small little things which you can do. If you don't know, then please don't invest in smaller. Direct investing should not be done especially in small caps and mid caps. So राजीव, बहुत ब्रीफली जो इन्वेस्टर, जैसा आप कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं थ्रू SIPs, क्या आप उनको अभी प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस देंगे, क्योंकि बाजार काफी हाई रेट्स पर हैं अभी? नहीं, देखिए सोनू जी, बाजार हाई रेट पे रिलेटिव होता है. अगर ये बाजार आज हम 2000 पॉइंट बढ़ने के बाद जब नीचे घटेगा तो लगता है चीप हो गया. तो क्वेश्चन इज नो, अगर आपके पास SIP है, प्लीज कंटिन्यू विद SIP.
Okay. और एसआईपी आप एक गोल के लिए करते हैं कि ये इतने टाइम पे मेरे को ये गोल होता है, उस तक करूंगा। तो अगर साल पहले शुरू करा है तो देयर इज नो रीजन कि आप उसको अभी रोक दें। प्लीज कंटिन्यू विद एसआईपी, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ एसआईपी, दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू गेट बेटर रिटर्न। सो आई वुड स्ट्रिक्टली से दैट प्लीज कंटिन्यू विद एसआईपी, and the only thing is if you think you are uncomfortable with one segment, please move into some other segment, but don't stop your SIP. थैंक यू सो मच राजीव, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये बहुमूल्य जानकारी और सलाह हमारे श्रोताओं को देने के लिए। श्रोताओं, ये थे बाजार विशेषज्ञ राजीव नागपाल, जो आज के बाजार के चलन पर हमसे बातचीत कर रहे थे। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अन्य एशियाई बाजारों में आज भारी बढ़त का रुख था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल द्वारा ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव न करने का आश्वासन बाजारों को देने से यूएस में बॉन्ड्स पर ब्याज दर बढ़ने और मुद्रास्फीति बढ़ने से जुड़ी निवेशकों की चिंताओं को राहत मिली। जापान का निकेई सूचकांक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों 1.7% की तेजी में रहे। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.6% बढ़कर बंद हुआ और हांगकांग का हैंगसेंग 1.2% की वृद्धि में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 3.5% के उछाल पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी ताजा समाचार मिलने तक तेजी का ही रुख था। लंदन का फुट्सी 0.3% और फ्रांस का कैक 0.4% की वृद्धि पर थे और जर्मनी का डैक्स मामूली बढ़त पर था। On the Wall Street, the key indices rallied yesterday, with the Dow hitting a record high as a sell-off in technology-related stocks eased and a rotation into cyclical shares continued after Federal Reserve Chair Jerome Powell's comments calmed inflation worries. Powell told lawmakers yesterday it may take more than 3 years to reach the central bank's inflation goals, a sign the Fed plans to look beyond any post-pandemic spike in prices and leave interest rates unchanged for a long time to come. The S&P 500 financial sector jumped 2.1%, while other cyclical stocks, including industrials, energy and materials, also rose. Microsoft, Amazon and Apple were down roughly between 0.3% and 1%, while Facebook, Netflix and Alphabet reversed earlier declines. So the Dow Jones Industrial Average climbed 425 points or 1.4% to close at 31,962. The S&P 500 advanced 44 points or 1.1% to end at 3,925. And the Nasdaq Composite added 133 points to 13,598. और अब मैक्रो इकोनॉमी से जुड़ी हमारी कुछ स्टोरीज हैं। जी, let's move on now, and the first story is on the credit rating agency. Moody's has raised India's growth projection for the next financial year beginning April 1 to 13.7% from 10.8%. Estimated earlier on the back of normalization of activity and growing confidence in the market with the rollout of COVID-19 vaccine. For the current fiscal, the US-based rating agency expects the economy to contract 7%, lower than its previous estimate of 10.6% contraction. The very large rebound incorporates the view that recovery in activity will continue with the rollout of vaccines and growing confidence in the market that activities are coming. The agency says recovery in activity will continue with the rollout of vaccines and growing confidence in the market that activities are going to be back to normal. उधर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 6 करोड़ 30 लाख कंपनियों के विशाल नेटवर्क के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का इंजन बन गया है। एमएसएमई क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 30% योगदान है और निर्यात में लगभग 50% योगदान है। बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 185वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोलते हुए आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि कोविड महामारी से खास तौर पर प्रभावित एमएसएमई क्षेत्र को संकट से उबारने और इस क्षेत्र को फिर बढ़ावा देने की विशेष जरूरत है। आरबीआई गवर्नर ने संबोधन में जिन अन्य क्षेत्रों पर बल दिया, उनमें विनिर्माण और मूलभूत ढांचा क्षेत्रों में भी कई अवसर उभरने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी को सबसे अधिक बल देगा।
गौरतलब है कि कई गहन संपर्क वाली सेवाओं के क्षेत्रों में इस संकट का गहरा प्रभाव पड़ा है। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड के A.K. भट्टाचार्य। श्री भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। जो आज मूडीज ने बहुत ही उत्साहजनक अपने जो रिवीजन किए हैं इंडियन इकोनॉमी को, अपने के जो एस्टिमेट्स हैं उनको लेकर, जो करंट फिस्कल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन को 10.6% से घटाकर 7% कर दिया है और आने वाले वर्ष के लिए ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है उसको 10.8% से बढ़ाकर 13.7% कर दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको प्रमुख कारण होंगे इसके पीछे? देखिए, ये लॉजिकल है। अगर पहले उनका मूडीज का जो असेसमेंट था वो 10.5% का कंट्रैक्शन था, उसके अनुसार अगर आप देखें उन्होंने अब 7% का कंट्रैक्शन दिखाया है। मूडीज दे आर नाउ गेटिंग इन लाइन विथ द एस्टिमेट मेड बाय द गवर्नमेंट की भी जो हमारे जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनका भी जो एस्टिमेट है 7.5% कंट्रैक्शन है, उसके साथ मिल गया है। और पर उनका जो नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है, मैं समझता हूं कि वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे। 13% ग्रोथ नेक्स्ट ईयर का, ये भी एक कह सकते हैं हम रियलिस्टिक है, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी अगर 7.5% में कंट्रैक्शन हुआ है, अगले साल स्टैटिस्टिकली आप देखेंगे तो इतनी लो बेस से इतना बढ़ जाना, डबल डिजिट 12-13% बढ़ना, मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के पोटेंशियल के अनुसार ही है। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। सवाल ये उठेगा कि मूडीज ने ये नहीं कहा कि उसके बाद वाला साल में क्या रहेगा, क्योंकि हमें ये देखना कि हमारा ट्रेंड ग्रोथ रेट क्या वापस पुराने 8-9% में आता है या नीचे जाता है। तो अगले साल के ग्रोथ से मुझे लगता है कि ये नेचुरल एरिथमेटिक एक ग्रोथ है। और आप हम प्री पैंडेमिक जो एब्सोल्यूट लेवल्स हैं जीडीपी के, उस पर पहुंच जाएंगे उसके करीब। करेक्ट। तो बेस में हम पहुंच जाएंगे। जो लॉस हमारा हुआ था, ये जो 203 लाख करोड़ का जो हमारी जीडीपी थी 2019-20 में, उसके में हम पहुंच जाएंगे। तो ये मैं समझता हूं कि एक रिकवरी है, पर हमें देखना है कि उसके बाद हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेट, उसके लिए कंजम्पशन, सब कुछ की जरूरत होगी। पर अगले साल की जो वृद्धि दर है 12-13%, आप ये पार फॉर द कोर्स कह सकते हैं। AKP, Moody's has also expressed that the implementation of the reforms because of which they have raised the credit rating is going to be difficult for India to implement. Well, I think given the kind of the political opposition that the farm sector laws have faced, I think Moody's putting a condition on that is understandable. But at the same time, I would say that if you look at the budget, some of the reforms that have been announced in the budget are, to my mind, are very implementable. They are not likely to face the kind of opposition that the farm law reforms have faced. So I have a mixed view on why Moody's is so defensive on this. Yes, our farm law reforms have got stuck in a way. But on the question of public sector policy reform, the question of privatization of public sector banks, these are an asset monetization program. These are all top class, first-rate reforms. Okay. So, and I don't see those reforms getting derailed by any such movement that probably has caused a problem for farm sector reforms. So, I think Moody's are influenced by what has happened to the farm sector reforms, and therefore that's why they are saying that they are putting it as a condition of sorts. Okay. And the RBI governor today has patted on the back of the MSME sector, so to speak, and as they have emerged as the engine of growth engine of the economy, with a vast network of about 6.3 crore enterprises, and they contributing 30% of the GDP and approximately 50% to exports. So what boost
further boost can the government or the RBI give to the MSME sector? The big boost the RBI can give to the MSME sector, which is a very critical sector, is how to make the cost of money cheaper. Right now, we are going through a phase where the bond yields are rising, and the danger is that the bond yields going up would also send out a signal to the market where the interest rate may stay elevated. Now, if interest rates stay elevated, then I think the MSME sector will be the first, but will be have to face the consequences of a high interest rate regime, where the cost of money will go up. So therefore, it will be important for the RBI to manage the bond market yields in a manner that the interest rates remain moderate, so that the cost of money for the huge MSME sector remains within their reach, so that they can grow faster and contribute more to GDP as well as to exports. Mr. Bhattacharya, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा है और भी सेक्टर्स में. कल ही हमने देखा कि आईटी, हार्डवेयर, फार्मा, उससे एक हफ्ते पहले टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर. तो आपको लगता है कि ये एक इफेक्टिव टारगेटेड पॉलिसी है स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए, जो एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा देगी, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, जॉब्स को प्रमोट करने के लिए? देखिए, ये एक नया, एक हमारे सरकार की पॉलिसी का नया एक आयाम है, एक नया एक दृष्टिकोण है, जहाँ पे सरकार एक नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी रेजिम से एक डिस्क्रिशनरी पॉलिसी में पिकिंग द चैंपियंस, जैसे कहते हैं कि जो चैंपियन कंपनियां जो हैं, वो अगर आप इस स्कीम के अंदर आ जाएं तो उनको 5 से 7% का एक टर्नओवर के हिसाब से उनको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, उससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे उनका एक्सपोर्ट्स बढ़ सकता है, उससे उनका सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है. तो इसके काफी इसके बेनिफिट्स भी हैं, और हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, किस तरह से होता है. आपने सही कहा कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स कवर हो गए हैं, 10 ऐसे सेक्टर आएंगे, मेरे ख्याल से 5 से सेक्टर का ऐलान और कर दिया गया है. तो सरकार इसमें काफी प्रतिबद्ध है कि इस पीएलआई स्कीम से हमें ये देखना पड़ेगा कि अगले साल में ये इस पीएलआई स्कीम से कितना इजाफा होता है हमारे एक्सपोर्ट्स में, कितनी वृद्धि दर में और जॉब क्रिएशन में. तो एक नया स्कीम है, हमें ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नमस्कार. Moving on, the global crude oil prices extended gains for the fourth session today to reach the highest levels in more than 13 months, underpinned by an assurance that U.S. interest rates will stay low and a sharp drop in U.S. crude output last week due to the storm in Texas. So Brent crude futures for April gained 37 cents to $67.41 a barrel, while U.S. crude futures for April rose 32 cents to $63.54 a barrel. A severe winter storm in Texas has caused U.S. crude production to drop by more than 10% or 1 million barrels per day last week, the Energy Information Administration said yesterday. उधर सोने के मूल्यों में लगातार तीसरे दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का वायदा मूल्य 0.2% कम होकर 46,439 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी का वायदा मूल्य 0.6% बढ़कर 69,930 रुपए प्रति किलो हो गया. गौरतलब है कि हाल में आई मंदी के चलते 10 ग्राम सोने के मूल्य में अगस्त के 56,200 रुपए के उच्च स्तर के मुकाबले लगभग 10,000 रुपए की कुल गिरावट दर्ज हो चुकी है. और इसके साथ ही अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है. श्रोताओं, हम आपको फिर बता दें कि आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स थे वो थे बाजार विशेषज्ञ राजीव नागपाल और बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य. दोनों का धन्यवाद. And before we close the headlines once again, rising for the third straight day, Sensex climbs 258 points, Nifty adds 115 points, but the rupee weakens 10 paise against the dollar. Credit rating agency Moody's raises country's growth projection for the next financial year to 13.7%, and MSME sector in India has emerged as a growth engine of the economy, says the RBI governor. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.